Yes, sir. सर कल वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए सर। Hello students. Hello, sir. Okay, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. यस सर। So yesterday I have given on homework. Okay. Nobody has done this homework. Why? Sir, yeah, sir. You have done this homework. Yes, sir. So how much you got that amplitude? So 3:2. So this ratio you are getting 3:2. A dash by A. This 3:2 you are getting. Yes, sir. But how 3:2 or 2:3? Can you please check? देखो A dash तो A से बड़ा नहीं हो सकता है, right? हो सकता है? It is not possible. यस सर। And others? बाकी लोग क्यों नहीं किए हो? कहाँ पे प्रॉब्लम है? So if you remember, I have given this homework. It's a very simple homework. I don't know why you people have not done this homework. So we have two slits S1 and S2. Okay, the amplitude of ray coming through S2, that is A, given. Similarly, the ray coming through S1, that amplitude is given A. And there is some transparent material is here, right? इसका thickness कितना है? The thickness is T and refractive index is mu. ठीक है? जो रे आपका ये आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम पास हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड गिवन है A डैश, और यहाँ पे आपका स्क्रीन है, ओके, एट ए डिस्टेंस ऑफ कैपिटल D. ऑल्सो देयर डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 दैट इज गिवन स्मॉल d. तो स्क्रीन में जो आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है I मैक्स, एंड जो मिनिमम इंटेंसिटी मिल रहा है I min, इनका रेशियो गिवन है, दैट इज हाउ मच? 25. सो आपको कैलकुलेट क्या करनी है? The amplitude of ray crossing through this transparent material to that of amplitude of ray that is crossing through slit on. This you have to calculate. Okay. So this A dash should be smaller than A, because जब ये आपका लाइट जो इंसिडेंट लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होगा, there will be some absorption of light here. So whatever intensity you are getting here, that should be smaller as compared to the intensity of incident ray, right? Intensity आपका इधर ज्यादा हो नहीं सकता है as compared to this. This intensity should be smaller as compared to this, है ना? And we know that intensity is proportional to amplitude square. तो अगर इधर आपका इंटेंसिटी कम है, so obviously एम्पलीट्यूड जो है लाइट का इधर obviously कम होगा. So A dash should be smaller than A. A dash should be smaller than A. So it's wrong. So to solve this question, it's a very simple question. So maximum intensity का मैंने फॉर्मूला लिखा आया था आप लोगों को. I net कितना होता है बेसिकली? बताओ. A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cosine of delta. Let me write this term here. So it is 2A1 A2 cosine of delta. Okay. Now maximum intensity के लिए क्या हो जाएगा आपका? I net will be equals to I max. When it will be possible? When phase difference between two rays, that will be either 0 or 2 pi or 4 pi or so on. Okay, so I can write from this equation that I max will be how much? It should be equals to A1 कितना है? A1 that should be कौन सा ये वाला ले या ये? No, A1 should be A dash. A dash. क्योंकि आपका ये जो रे है यही तो आपका सुपर इम्पोज हो रहा है स्क्रीन पे, नहीं? जो रे आपका
ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास हो रहा है, यही रे तो आपका यहाँ पे सुपर इम्पोज कर रहा है, किसके साथ, इसके साथ. सो यू हैव टू टेक A1 as, sorry, you have to take A dash as A1. So it should be A dash square. Then A2 is how much? A2 is A square plus 2A dash. Because delta is how much here? 0 or 2 pi or 4 pi. So cos delta will be how much? Or. So I max will be how much? Simply A plus A dash ka whole square. होल स्क्वायर. Similarly, if you calculate I mean will be how much? आई मीन के लिए क्या हो जाएगा आपका, आई मीन कब पॉसिबल है, जब आपका डेल्टा कितना है, आइदर पाई और 3 पाई और 4 5 पाई. सॉरी ये सॉरी इट शुड बी 5 पाई. ठीक है, तो इसके लिए आपका आई मीन कितना हो जाएगा, कैन यू प्लीज टेल मी, इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस डेल्टा हियर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos पाई कितना होता है, माइनस होता है, राइट. सो इट शुड बी आई मीन कितना, A minus A dash. A माइनस ए डैश का होल स्क्वायर. So can I say that A plus A dash divide by A minus A dash, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, 25. यही तो गिवन है आपको, नहीं आई मैक्स का, आई मैक्स हाँ सर सही है यहाँ तक सही है, चलो ठीक है. ओके, सो अगर बोथ साइड आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, A प्लस A डैश डिवाइड बाय A माइनस A डैश, दैट शुड बी हाउ मच, प्लस माइनस 5. सो नाउ लेट अस टेक फर्स्ट प्लस 5. अगर प्लस 5 लोगे तो फिर क्या मिलेगा, A प्लस A डैश डिवाइड बाय A माइनस A डैश, ये कितना होगा, प्लस 5 है. तो यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो A प्लस A डैश दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 5A माइनस A डैश. ठीक है ना. तो यहां से अगर कैलकुलेट करोगे कितना मिलेगा आपको, बताओ. इस A डैश को इधर लेके आओगे तो फिर क्या मिलेगा, 6A डैश दैट शुड बी इक्वल टू 4A. 6A dash that should be equals to 4A. Is it okay? Yes sir. It means A dash will be how much, 4 by 6A, that should be equals to 2 by 3A. ठीक है, this is your A dash, right? So it means A dash by A कितना है, that will be 2 by 3. अच्छा, अगर माइनस लोगे तो फिर कितना होगा, if you take minus sign here, then you will get, अगर यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर करोगे फिर आपको मिलेगा A प्लस A डैश डिवाइड बाय A माइनस A डैश, दैट शुड बी हाउ मच, -5. इट मींस A प्लस A डैश शुड बी इक्वल्स टू -5 A माइनस A डैश. ओके, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 4A डैश इक्वल्स टू 6A, 4A डैश इक्वल्स टू 6A, राइट. इज इट ओके, क्या कैलकुलेशन ठीक है. यहां से आपको क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 5A डैश, और इस साइड आपका क्या है, A डैश है. सो A डैश अगर इस साइड लेके जाओगे क्या मिलेगा आपको, 4A डैश मिलेगा. एंड यू हैव -5A, इस साइड आपका क्या है, A है. तो इफ यू ब्रिंग दिस -5A दिस साइड, यू विल गेट हाउ मच, 6A. सो 4A डैश दैट शुड बी इक्वल टू 6A. तो यहां से जो आपको मिल रहा है A डैश बाय A दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 3/2. बट ये पॉसिबल नहीं है, A डैश बाय A दैट इज 3/2, दैट इज नॉट पॉसिबल. क्यों, क्योंकि जब आपका रे कोई मटेरियल से पास होता है ना, सो इसका इंटेंसिटी क्या होगा, बेसिकली घटेगा ना कि बढ़ेगा. तो इफ देयर इज डिक्रीज इन इंटेंसिटी, देयर शुड बी डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. ओके सर. ओके, तो कहाँ पे मिस्टेक हुआ था, सर स्क्वायर रूट नहीं लिया था. अच्छा, स्क्वायर रूट नहीं लिया. यस सर. नाउ इज इट फाइन, हाँ सही है सर. everybody got this?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now shall I erase? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ yes. सर जो रे पास हो रहा है सर सिल्ट वन से सर, हाँ उसकी सर सिल्ट वन से जो रे पास हो रहा है सर, हाँ उसकी सर एनर्जी भी तो कम हो जाएगी सर। जो आपका इससे हाँ सर। एनर्जी, टोटल एनर्जी बोल रहे हो या एक पार्टिकुलर फोटोन का एनर्जी बोल रहे हो आप? सर जो रे से पास हो रहा है तो उसके सर फोटॉन निकलने के समय की एनर्जी सर। हाँ देखो, एक तो आपका दो दो चीज होता है ना, ये चीज आप हमेशा मैं फ्रिंज विथ जब कैलकुलेट किया था उस टाइम भी बताया था। सपोज मान लो एक लाइट है, एक लाइट है, तो जब सपोज मान लो एक फोटोन को ले रहा हो, तो फोटोन जब एक मीडियम से पास होता है तो उसका कौन सा चीज हमेशा अनचेंज रहता है? सपोज यू हैव अ फोटोन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू ए मीडियम, कौन सा चीज हमेशा अनचेंज रहता है? व्हिच क्वांटिटी विल बी रिमेन सेम when a photon is passing through a material? Which quantity will Frequency. frequency will remain same? So if nu is same, energy कितना होता है फोटोन का? It's टोटल new. h nu. If nu is same, क्या है, एनर्जी कम होगा? नहीं कम होगा। No, sir. एनर्जी एक पार्टिकुलर फोटोन का एनर्जी कम नहीं होगा, बट अगर टोटल एनर्जी यहाँ पे काउंट करोगे टोटल एनर्जी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आप इस मटेरियल में कुछ फोटोन्स क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। वहां पे कुछ फोटोन्स क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो इफ यू काउंट टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी विल बी हाउ मच? सपोज यू हैव n नंबर ऑफ फोटोन, so total energy will be how much of that beam? That should be n h nu, but that number of photons in this side will be less, क्योंकि कुछ photons क्या हो जाएगा, इसमें absorb हो जाएगा, उसीलिए total energy count करोगे that should be less. Am I correct? Yes sir. Okay. So yesterday I shared that state of polarization basically happens due to superposition of two electromagnetic waves, and we have discussed few problems also. Okay. Now I'll give some problems. I'll ask you, please people tell me. So first problem. Suppose you have a two electric vector or two EM wave having electric field Ex. Ex is given, that is E naught by root 2. E naught by root 2 sine, or E naught by root 2 cosine omega t plus kz. Okay. And another electric field is given, that is E naught by 2 sine omega t plus kz. Now if the superimpose, what will be the state of polarization of resultant wave? If they superimpose, what will be the state of polarization of resultant wave? क्या हो जाएगा बताओ? Will it be circular? Oh, The elliptics. elliptical. Of course elliptical. Okay. So if you this equation you can write like what? Ex by E naught by root 2, right? Equals to cosine omega. So if you square this and if you arrange this equation, you will get E naught, sorry, Ey by E naught square. That should be equals to how much? 1. So कौन सा equation है? Ellipse का है. Did you get how this equation came? Everyone, please respond me. Sir. So this equation is basically representing the equation of ellipse. Okay. So this should be elliptical polarization. This ray should be, when they superimpose, the resultant wave should be elliptical polarized. Okay. Now suppose ये वाला second case में इस तरह की हो गया फिर. If Ex is like this, अच्छा, what does X means here? What does X means here? Please tell me. What is the meaning of X here? क्या meaning है?
X is representing state of polarization of this vector, that is along x direction. Y is representing here state of polarization, that is along y axis. So now if Ex is like this and Ey is like this, then what will be the state of polarization? You can see both ray is having same amplitude and they have same, sorry, they have phase difference. How much phase difference is there? 90 degree. 90 degree. So this is the case of circularly polarized. Circularly polarized. So if they superimpose, then you will basically get circularly polarized light, because in this case you can get Ex square plus Ey square, that should be equal to how much? E naught square. Okay. Now if the case is like this, क्या इतना लिख लिया आप लोगों ने? Is it clear? Yes, sir. Okay. Now Yes, sir. next Sir. problem. Yes. तो इसमें प्रोपगेशन वेक्टर z है ना, तो पोलराइजेशन का डायरेक्शन x एक्सिस है. Polarization direction is x. Okay. And propagation vector direction is along which direction? Z. Negative z or positive z? Negative z. That should be negative z. Okay. 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 Okay, sir. Now case 3. Suppose is your electric field vector is like this. So if Ex is E naught sine of omega t plus kz and Ey as it is, then what will be the state of polarization? Plane polarized light. Plane polarized, because in this situation what you will get? Ey equals to Ex. So this is basically the equation of straight line. So there is a linear relationship between Ex and Ey. So this ray, you can say this is a linearly polarized light or plane polarized light. Okay. Is this इतना clear है आप लोगों को? Okay. Yes, sir. If it is clear, then we'll go to that next topic. Okay. So the next topic is really interesting. That is a double refraction. Okay. So suppose in ordinary material, for example glass. So suppose मान लो ग्लास के ऊपर कोई आपका रे इंसिडेंट होता है. सपोज मान लो अनपोलराइज्ड लाइट और आपको ग्लास के ऊपर इंसिडेंट होते हैं ना. Suppose this is your glass having refractive index N2 and this side you have a air having refractive index N1. तो कोई पर्टिकुलर एक एंगल सपोज मान लो थीटा आई में इंसिडेंट हुआ, तो आपको रिफ्रैक्टेड रे कितना मिलता है? एक ही आपका रिफ्रैक्टेड मिलेगा, है ना. इन जनरल क्या होता है? इफ यू साइन ए इंसिडेंट रे देयर विल बी ऑन रिफ्रैक्टेड रे. सो दिस इज general case. This is for general crystal. But there are few special crystal exist in nature. There are few special crystal exist in nature. Okay. So if you suppose this is your crystal, special crystal. Now, if you shine unpolarized light, on this crystal, basically this ray will be splitted into two refracted ray. This ray will be splitted into two refracted ray. Okay. And one is called O ray, that is means ordinary ray. Another is called E ray. It means extraordinary ray. Okay. So in general crystal, what will happen if you shine a ray, unpolarized light, you will have only one refracted ray. But some special crystal exist in nature.
for example, calcite, quartz. If you shine unpolarized light on this crystal, you will have two refracted ray. One is called O ray and another is called E ray. And both these refracted ray, they are basically plane polarized in nature. So such kind of crystal is known as double refraction crystal. Double refraction crystal, because that they are basically giving you two refracted ray. Okay. So such kind of crystal is known as double refraction crystal. Double refraction. Oh, sorry. Crystal. Okay. Now for let us define that angle. Suppose मान लो ये आपका incident ray का जो angle है, that is, let us define this is your theta I. Okay. So the angle between O ray and vertical line, let us define this angle is how much? कितना define करें हम? Theta O. Theta O means जो refracted ray का, sorry, O ray का जो angle है, that is theta O. And let us define this angle, this refracted angle, the angle between vertical line and refracted E ray. That angle let us define theta E. क्या इतना clear है? So according to Snell's law, what I can write? According to Snell's law, suppose जो क्रिस्टल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानो n2 एंड जो जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानो n0. ठीक है. नाउ दिस एक्चुअली आप लोगों का ये कॉन्सेप्शन है ना कि जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी होता है ना. सपोज आप क्या सोचते हो कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फिक्स्ड है. पीपल यूज्ड टू थिंक लाइक दिस, राइट? Sir. Yes, sir. But this is not true. You see, refractive index basically depends upon angle of refraction also. For this case, you see, if you apply Snell's law, theta r is different for two different ray. Theta r देखो इनके लिए जो है इनके लिए different है दो रे के लिए, right? तो इसीलिए इस क्रिस्टल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ओ रे का वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू ई रे. मतलब इस क्रिस्टल के लिए ओ रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ई रे. So if you apply Snell's law for O ray, so I can write that refractive index of O ray, that is mu O. Mu O कितना हो जाएगा बताओ? Mu O can be like sin I by sin theta, theta I लिया ना मैंने. Let me. So sin theta I by sin of theta O. That will be the refractive index of O ray. And what will be the refractive index of P ray? How much it will be? Can you please tell me? कितना हो जाएगा? Sin theta I by sin theta. Sin theta I by sin of theta E. Okay. Since theta O and theta E, they are different. So obviously the refractive index of O ray and refractive index of P ray for this material, it will be different. Now we can understood that refractive index is not fixed. It depends upon the angle of refraction also. Is it clear? क्या clear है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now from this equation, can we write like mu O by mu E? कितना हो जाएगा बताओ? ये दोनों equation से. If you divide this equation by this equation, so sin theta I will be cancelled. Basically, you will get sin theta O. Theta O या theta E? Theta E. By sin theta. Or sin theta O. Sin theta O. Okay. Okay. Also we know that velocity of EM wave कैसे लिखते हैं हम?
दो रे है, ओ रे है एंड ई रे, बोथ आर बेसिकली प्लेन पोलराइज्ड, बट देयर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, बिकॉज वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? एंड बोथ रे इज हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो ऑब्वियसली उनका जो ये है स्पीड है थ्रू आउट दिस क्रिस्टल दैट विल बी डिफरेंट. सो स्पीड ऑफ ओ रे, how much it will be? I can write speed of light divided by refractive index for O ray. Similarly, speed of E ray, I can write speed of light divided by refractive index of E ray. Okay. Now, how much will be the VO by V? इनका रेशियो कितना हो जाएगा बताओ? It should be mu E by mu O. Okay. Okay. अगर सपोज मान लो if theta O is greater than theta E, if theta O is greater than theta E, तो इस केस में ए वाला रेशियो कितना हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा. If theta O is greater than theta E, then sin theta theta O should be greater than sin theta E. If theta O greater than theta E, sin theta O should be greater than sin theta E. So this ratio will be smaller than 1. If this ratio is smaller than 1, then what I can say that in that case mu E will be greater than mu O. Mu E will be greater than mu O. Okay. Also, if this ratio is less than 1, ये ratio क्या है? Less than 1 है, right? So this ratio should be greater than 1. अगर mu O by mu E, if it is less than 1, obviously mu E by mu O, that should be greater than 1. So what I can write that velocity of O ray will be greater than velocity of E ray. Velocity of O ray will be greater than velocity of E ray. So when theta O is greater than theta E, for this crystal, this is known as positive crystal. This is known as positive crystal. Example I have, that is quartz. Example क्या है? You have quartz. Is this part clear? Now, suppose मान लो if theta E is greater than theta O, इस केस में क्या हो जाएगा? पूरा उल्टा हो जाएगा. इस केस में क्या हो जाएगा आपका? mu O, refractive index of O ray will be greater than refractive index of E ray, and also you will get velocity of E ray will be greater than velocity of O ray. तो जिस क्रिस्टल में जो E ray का रिफ्रैक्टेड एंगल इज ग्रेटर देन O ray का रिफ्रैक्टेड एंगल, उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव क्रिस्टल बोलते हैं. नेगेटिव क्रिस्टल. एग्जांपल क्या है? कैल्साइट. क्या क्लियर है इतना? Is this part clear to all? What I am saying? Yes, sir. तो दो पॉसिबिलिटी है. ऐसा नहीं कि हमेशा थीटा ओ विल बी ग्रेटर देन थीटा ई. इट कैन बी ग्रेटर, थीटा ओ कैन बी ग्रेटर देन थीटा ई. It can also be possible that theta E can be greater than theta O. So depending upon type of double refraction crystal, whether it is positive double refraction or it is negative double refraction. Okay, is this part clear to all? Okay. Now, let us define few parameter, few property of E ray on and O ray. So let us define. This side you have O ray and this side you have E ray. Okay. So first point, the speed of O ray. You write first point about O ray. The speed of O ray is constant in all direction of crystal. The speed of O ray is constant in all direction of
crystal. But speed of E-ray is not constant. You can write speed of E-ray is different in different direction of crystal. इसका मतलब क्या है? सपोज मान लो आपके पास एक क्रिस्टल है ना, आप सपोज आपका एक ओ रे इधर जा रहा है, तो इनका जो स्पीड होगा, सपोज मान लो एक ओ रे इधर जा रहा है, इनका स्पीड सेम होगा। सपोज मान लो एक आपका ओ रे इधर जा रहे हैं, सारे जो ओ रे है सारे का स्पीड क्या होगा? सेम होगा। बट ई रे के लिए ये नहीं है। सपोज मान लो आप एक ई रे आपका इधर जा रहा है, इनका जो स्पीड होगा, अगर एक ई रे इधर जा रहा है, इनका जो स्पीड होगा दे आर बेसिकली डिफरेंट। तो ई रे के लिए जो स्पीड होता है दैट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, है ना, किस डायरेक्शन में जा रहा है। बट ओरे के लिए ऐसा नहीं, ओरे का स्पीड क्या होता है? हर डायरेक्शन में सेम होता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ओरे इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन क्रिस्टल, बट ई रे दैट डायरेक्शन स्पीड इज डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी that O ray obey Snell's law of refraction. O ray obey Snell's law of refraction. But E ray does not obey the Snell's law of refraction. Does not obey Snell's law of refraction. Okay. 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 Now this is about your property of O ray and E ray. Now another part, that wave front. हाँ, yes. सर ई रे के लिए तो स्नेल वाली प्रॉपर्टी लगाई थी। हाँ, ई रे के लिए स्नेल वाली प्रॉपर्टी लगाई थी। हाँ, प्रॉपर्टी बेसिकली हम लगाते हैं, बट this is not exact. Actually, it will not always appropriate. Appropriate नहीं है. Your point is absolutely correct. That basically we used to apply this formula, Snell's law formula for E-ray. In fact, in JAM exam, they used to give a problem on this based on this Snell's law for E-ray also. But if you see their exact property, they didn't follow Snell's law appropriately. Okay. Okay. So I have applied this formula, this Snell's law for E-ray, but it is not always true. Okay. Yes, sir. Okay. Now we'll discuss about that wave front in negative crystal. In negative crystal. Wave front in negative crystal. Okay. So another point before that, you can mention. Another point before this, you can mention that speed of O ray and speed of E ray is same along the direction of optic axis. Speed of O ray and speed of E ray is same along the direction of optic axis. ठीक है, ठीक है. So suppose ऑप्टिक एक्सिस मतलब? ऑप्टिक एक्सिस मतलब अभी मैं बताता हूँ आपको. Let me draw the diagram. I'll tell after that what is optic axis. Okay, sir. So suppose you have some crystal, and let us assume this side you have, this is your optic axis. Okay, OA is the optic axis, and this axis actually perpendicular to optic axis. ठीक है. अब सपोज मान लो आपका जो लाइट सोर्स है, जो आपका लाइट है, ओ रे एंड ई रे का जो सोर्स है कहाँ पे है? सेंटर पे है.
है ना, जो आपका नेगेटिव क्रिस्टल है इसका सेंटर पे है, ठीक है। तो आफ्टर टाइम टी, so you have a source of light where at the center, and here at the center you have O ray as well as E ray. So after time t, what will be the wavefront of O ray? O ray का जो wavefront का नेचर किस तरह की होगा? तो देखो O ray क्या होता है, इट इज O ray का जो स्पीड होता है दैट इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो टी टाइम में इस डायरेक्शन में भी जितना ट्रेवल करेगा, इस डायरेक्शन में भी उतना ही ट्रेवल करेगा, इस डायरेक्शन में भी उतना ही ट्रेवल करेगा, मतलब हर डायरेक्शन में क्या करेगा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर आफ्टर टाइम टी में उसका वेव फ्रंट देखना चाहोगे तो किस तरह के दिखेगा आपको, इट विल बी लाइक ए स्फीयर, बिकॉज इसका स्पीड क्या है, इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑल डायरेक्शन ऑफ दैट क्रिस्टल, सो इट विल ट्रेवल सेम डिस्टेंस at the same time. So after time t, wavefront will be look like sphere, right? And in 2D it will look like how it will look like, it will look like a circle, ठीक है ना। So this is for what, this is for O ray. Now what will be the wavefront of E ray after time t, कैसे दिखेगा? तो देखो पहली बात है ऑप्टिक एक्सिस की तरफ तो ओ रे एंड ई रे का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा सेम होगा, क्यों? क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस की अलोंग दो रे का स्पीड जो है सेम होता है। तो ओ रे एंड ई रे एट द सेम टाइम अलोंग ऑप्टिक एक्सिस दे विल हैव सेम पोजीशन, बट अदर डायरेक्शन में नेगेटिव क्रिस्टल के लिए क्या है, स्पीड क्या है, ओ रे का ज्यादा है एज कंपेयर टू ओ रे। So that's why in other direction they will travel long distance, they will travel larger distance as compared to O ray, okay? And सबसे ज्यादा distance travel करेगा किस side, that will be perpendicular to the direction of optic axis। मतलब O ray sorry E ray का अगर wave front देखोगे किस तरह की दिखेगा आपको, it will look like so this is for E ray, ठीक है। And it will look like a what type of shape it will look like, it will look like ellipse। कितना क्लियर है, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, सारे लोगों को क्लियर है ये? यस सर। ओके, so this is wave front in negative crystal. Now if I draw that wave front for positive crystal, how it will look like? If I draw this wave front for positive crystal, then how it will look like? Can you please tell me? So again this side you have optic axis OA, right? And this is perpendicular to optic axis. Here you have a source of O ray and E ray, okay? So after time t, for positive crystal also, for O ray it will look like, how it will look like, it will look like a circle. For O ray it will look like a circle, okay? ओके, अब E ray के लिए किस तरह की हो जाएगा? E ray के लिए देखो along optic axis it will be same, distance travel will be same, so they will be at the same position, but other direction में क्या है, स्पीड किसका ज्यादा है पॉजिटिव क्रिस्टल में, O का ज्यादा है एज कंपेयर टू E ray। तो E ray का स्पीड कम है तो इनका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। एंड सबसे कम कहाँ पे होगा, द एक्सिस द डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस, मतलब इस डायरेक्शन में स्पीड सबसे कम है। द डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस, एट दिस डायरेक्शन स्पीड ऑफ E ray इज लीस्ट, सो इट विल ट्रैवल लीस्ट डिस्टेंस। तो इसका अगर शेप ड्रॉ करना चाहोगे, इट विल लुक हाउ, इट विल लुक लाइक, इट विल लुक लाइक look like this. My drawing is not good, so you can
manage also. Okay, so this will be the wavefront for E-ray. Is this clear? Is this part clear to all? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Now, another part that is important for your exam. So superposition, you can heading, give that heading. Superposition of two plane polarized light. Or you can say that superposition of two plane polarized wave. Okay. So again, you have a double refraction crystal. Suppose this is your double refraction crystal. जब टाइम हो जाएगा बता देना, ठीक है? इसी का कितना हुआ टाइम? 6:40. 40. You have 15 minutes more, right? Okay. Yes, sir. Suppose this is your double refraction crystal. Okay, and this axis is optic axis. Suppose this is your x axis, and this axis actually representing optic axis, and this is the axis that is perpendicular to optic axis, and let us give this name, that is y axis. Okay. Okay, so now suppose a plane polarized light is incident on this double refraction crystal. So this is actually what? This is your double refraction crystal. अच्छा, आप लोगों को फ्रैंकली बताओ, आप लोगों को मेरा क्लास समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है? No, sir. नहीं सर। No, sir. सबको समझ में आता है ना? Yes, sir. Yes, sir. टू बी ऑनेस्ट, हाँ, बिकॉज इफ अगर कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, यू शुड मेंशन, ओके, दैट विल बी इम्पोर्टेंट एक्चुअली, बिकॉज अल्टीमेटली क्या करना है, आपको सिलेक्शन ही करवाना है ना, हमारा काम क्या है, आपको सिलेक्शन करवाना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है? तो आपको बोलना पड़ेगा इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. Okay, so it will be very good actually if you tell me if there is any problem in the class, because ultimately हमारा ड्रीम क्या है? आप, our dream is to select you people. हमारा ड्रीम ये है कि आप लोगों को अच्छे इंस्टीट्यूट में सेंड करना है ना, एट एनी कॉस्ट. सो देयर शुड बी, आपको जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आई क्लास में, यू शुड टेल मी फ्रैंकली, है ना? आप कॉल करके भी बता सकते हो कि सर हाँ यहाँ पे मेरा समझ में नहीं आया, है ना? ओके, बट समझ में आना चाहिए चीजों, है ना? Okay, so suppose this is your double refraction crystal and a plane polarized light is incident, and incident ray having amplitude कितना है? इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड है a, and that is making angle theta with respect to optic axis. So along this axis, how much will be the amplitude? So this ray, you have sent a plane polarized light having amplitude a. So this ray will be splitted into two components. One will be called E ray, that will be parallel to optic axis. So E ray का जो amplitude हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? It will be a cosine of theta. Component along this side, how much it will be? इसका amplitude a है, तो this side कितना हो जाएगा? A cosine theta. Along this side, how much it will be? Amplitude will be how much? This will be. So this ray is splitting into two components. One will be along x-axis. This will amplitude will be. So इस axis में जो ray आएगा, उसका amplitude कितना होगा? A cos theta. And this ray, the ray that is splitted along optic axis, this is called basically E ray. And that ray splitted along y-axis, this is known as O ray. ठीक है? तो जैसे आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सेंड की हो, it will be splitted into two components. One will be called E ray. E ray is actually parallel to optic axis, and O ray actually perpendicular to optic axis. सर Yes. सर ये ऑप्टिक एक्सिस क्या होता है? Oh, extremely sorry, I forgot to tell. Extremely sorry. So I'm giving an example. Suppose you have a calcite crystal. Suppose you have a calcite crystal. Suppose you have a calcite crystal.
now if you see this point, suppose this point, इस point में कितना surface है बताओ. If you consider this point, how many surface actually touch this this point? एक तो ये वाला upper वाला side, हाँ, okay. Now if you draw a axis, suppose you are drawing a axis in such a way, the angle between this angle between this line and upper surface, angle between this line and this surface, angle between this line and this surface, तीनों surface के साथ अगर equal angle बनाएगा तो उस axis को हम बोलेंगे optic axis. So you have considered a point that is touching three surfaces. Now if you draw a line along this point, and if this line is making equal angle with these three axes, these three surfaces, then this line will be called optic axis. And if you draw any parallel line, any line parallel to optic axis, this will also act as a optic axis. Is this clear what I am saying? Is this Yes, clear sir. or I have to repeat? सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यही ऑप्टिक एक्सिस है? आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो फिर वो आपको इंस्ट्रूमेंट में जाना पड़ेगा. ओह, ओके सर. ठीक है. So can you tell me the profile of incident ray? Profile of incident ray क्या हो जाएगा? Profile of incident plane polarized light. ठीक है. तो E ray के लिए हम क्या लिखेंगे इक्वेशन? What will be the form of E ray? E ray will be how much? It will be in which direction? That is along x-axis. So Ex will be how much? It will be a cosine theta, because E ray का जो ये है amplitude कितना है? A cosine theta, and you will have sinusoidal term also will be there. So this will be the profile of incident E ray. So this a cos theta I can write like E naught x sin omega t. So this is the profile of E ray. And for E ray, how it will look like? It will be EY. EY can be written as a sin theta. Then you will have sine of omega t term. And a sin theta will be how much? That will be simply some number that will be E naught I sine of omega t. E naught I sine of omega t. Okay. So you have two plane polarized light, one along x-axis and other along y-axis. But they are traveling in which direction? They are traveling perpendicular to board. किधर जा रहा है? Perpendicular to the board. And suppose मान लो आपका जो डबल रिफ्रैक्शन क्रिस्टल है उसका थिकनेस मानो T. आपका कोई डबल रिफ्रैक्शन क्रिस्टल है T. तो दो रे है आपका, दोनों रे ही आपका T डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. थिकनेस किधर ले रहे हैं हम? परपेंडिकुलर टू बोर्ड. मतलब आपका क्रिस्टल किस तरह की है? इस तरह की मानो बॉक्स की तरफ मानो. सपोज मान लो ये आपका ये क्रिस्टल है. ठीक है. तो दोनों का जो क्रिस्टल का थिकनेस है कितना है? T है. So both rays traveling how much distance? T distance they are traveling. And that T distance in which direction I am taking the direction that is perpendicular to board. Now if both rays traveling T distance, so there will be phase difference between both rays. जो आपका emerging ray होगा उसका जो emerging E ray and O ray होगा दोनों के बीच में कुछ phase difference आ जाएगा. क्यों? This is the profile. You see, incident ray का कोई phase difference नहीं है. दोनों ray का जो phase difference है कितना है? Incident ray का देखो. The phase difference between E ray and O ray, E ray and O ray, how much? Phase difference कितना है? Incident ray का? How much? Zero. Zero. But when they will travel throughout this double refraction crystal, there will be some finite phase difference between E ray and O ray. Why? Because
दो रे का जो फेज वेलोसिटी है वो क्या है, डिफरेंट है. So there should be some पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस कैसे हम पार्ट ऑप्टिकल पाथ कैसे हम लिखते हैं, n इंटू टी लिखते हैं ना. ऑप्टिकल पाथ कितना होता है, n इंटू टी होता है. अब दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों का डिफरेंट है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डिफरेंट है. तो दोनों के बीच में पार्ट ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आ जाएगा. कितना आ जाएगा वो, NO minus NE, sorry, in terms of mu I'll write. So it will be how much, mu O minus mu E into C. So when they will travel this T amount distance, there will be some optical path difference. So if there is optical path difference, then what I can say, there will be phase difference between these two rays. That phase difference will be how much, 2 pi by lambda into path difference. Path difference कितना है, mu O minus mu E into T. Is this part clear? जब दो रे आपका T डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब जो इमर्जिंग रे होगा, जो आपका ई रे एंड ओ रे, जब आपका क्रिस्टल के बाहर आएगा तो दो रे के बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि दो रे का आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिफरेंट है. सो देयर शुड बी सम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस. इफ देयर इज सम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, देयर शुड बी सम फेज डिफरेंस आल्सो. दैट विल बी हाउ मच, 2 पाई बाय लैम्डा म्यू ओ माइनस म्यू ई इनटू टी. सो इमर्जिंग रे का अगर आप प्रोफाइल लिखोगे किस तरह की हो जाएगा, इमर्जिंग रे का प्रोफाइल किस तरह की हो जाएगा बताओ. इट विल बी, हाउ इट विल लुक लाइक, प्रोफाइल ऑफ इमर्जिंग रे. So I can write for E ray, that will be Ex equals to how much, E naught x sine of omega t plus delta. And for O ray I can write Ey, that will be E naught y sine of omega t. Now you see there is some phase difference between these two rays. Okay. Now if these two emerging rays superimpose, then there is a various possibility of state of polarization. अगर ये दोनों रे आपका सुपर इम्पोज करे तो इनका there can be various possibility of state of polarization. जो state of polarization होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डेल्टा के ऊपर डिपेंड करेगा. Now if they superimpose, what I can write from this equation, क्या इतना क्लियर है आप लोगों को. ये आपका इमर्जिंग रे का प्रोफाइल है ना. Now if these two emerging ray superimpose, you will get various kind of state of polarization. That depends upon what factor, that depends upon phase difference as well as the angle of incident. That depends upon phase difference as well as angle of difference, angle of incident. क्या इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो फिर हम लिख सकते हैं Ex को हम क्या लिख सकते हैं बताओ. Ex can be written as E naught x sin omega t cosine delta. Then another term will be there, that will be E naught x cosine omega t sine delta. I can write like right. I can write. Now you see, sine omega t will be how much? That will be Ey by E naught y from this equation. In place of sine omega t, what I can write, that will be Ey by E naught y. And cosine omega t, what I can write, cosine omega t, that will be 1 minus sine square omega t. And again in place of sine square omega t, what I will substitute? I will substitute is Ey square divided by E naught y square. So what I will write, this equation further I can write as Ex equals to E naught x into sine omega t, that will be how much? That will be Ey by E naught y. And you have phase factor, that will be how much? That will be cosine of delta. And second term हम क्या लिख सकते हैं, second term को, in place of cosine square, in place of cosine omega t, I'll write square root of 1 minus sine square omega t. So I can write like E naught x into 1 minus sine square omega t. Sine square omega t means Ey by E naught y.
का square, right? Then you have phase factor, that will be how much? It is sine of delta. Time हो गया? Time is over, na? So tomorrow from here I will continue. Okay. So if you have doubt, you can ask me. Otherwise, I'll stop. Is this part clear? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If it is clear, then I should stop here. Tomorrow I'll. Sir, Yes. Okay, वो sir, फर्स्ट thank you. एग्जांपल कराया था ना ई रे, Sorry. फर्स्ट एग्जांपल में इलेप्टिक्स जो कराया था वो राइट सर्कुलेटरी था या लेफ्ट सर्कुलेटरी? उसको आप चेक करो. कल वाला आपको समझ में आया था? I have done yesterday on problem. आपको समझ में आया था? यस सर, समझ में आया था. अच्छा, समझ में आया ना. राइट एंड लेफ्ट कैसे चेक करते हैं? तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में दिक्कत आ रही है सर. लेफ्ट. अच्छा, उसमें दिक्कत आ रही है आपको. ओके. यस सर. ओके. ठीक है. तो मैं पिछले बार आपको समझ में नहीं आया, मतलब कल जो लास्ट में डिस्कस किया था. वो समझ में आ गया सर. इलिप्स में दिक्कत आ रही है. इलिप्स में क्यों दिक्कत आएगी? एग्जांपल कराया था ना अभी हाँ. फर्स्ट, उसमें सर लेफ्ट इलेप्टिक्स होगा या राइट इलेप्टिक्स होगा? अच्छा, उसमें आप EX कितना लिखा था बताओ? E0 by √2, right? Then you have cos cosine omega t omega t plus kz. and second आपका UI will be how e much? naught Sine of sin omega t kz. okay. Okay, so this ray ये किधर ट्रेवल हो रहा है आपका? नेगेटिव z डायरेक्शन, राइट? यस सर. So suppose this is your x axis, this is your y axis, और z डायरेक्शन किधर होगा फिर? That will be like this. z डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा नहीं? सर ठीक है. अब रे आपका जो ये है, लाइट ट्रेवल हो रहा है नेगेटिव z डायरेक्शन. ओके, तो पहले आप डिफरेंट ओमेगा टी के लिए चेक करो EX EY कितना है. अच्छा, जब आपका टी को ओमेगा टी 0, ठीक है ना? अच्छा, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दिस टर्म को इग्नोर करना पड़ेगा. जस्ट यू हैव टू चेक z is equal to 0. हाँ, दिस पार्ट यू शुड इग्नोर. आप चेक करो, आप हो जाएगा. यस सर, ये कर दिया हूँ. ex is equal to e naught by root 2 and ey is equal to 0 what omega t is equal to. हाँ, E0 by √2 ये कितना हो जाएगा? 0, राइट? जब ये पाई Yes, बाई 2 हो जाएगा फिर कितना आ जाएगा? ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, राइट? और 0 and e naught. E0 हो जाएगा. तो आपका मोशन किस तरह की हो रहा है? पहले यहाँ है स्टेट ऑफ जो पोलराइजेशन, फिर किधर चला गया? इधर चला गया. ठीक है. और रे किधर ट्रैवल हो रहा है आपका? आउट ऑफ द बोर्ड और इन और इट शुड बी बोर्ड. हाँ, आउट ऑफ बोर्ड. आउट ऑफ बोर्ड में तो जेड पॉजिटिव हो गया ना? यस सर. इनवर्ड होगा. इट शुड बी इनवर्ड, राइट? ओके, इनवर्ड है. ठीक है. अब ये आपका जो फेनोमेना है कौन डिस्क्राइब कर पा रहा है? कैन इट डिस्क्राइब बाय दिस राइट हैंड? नहीं कर पाएगा, राइट? कैन दिस फेनोमेना बी डिस्क्राइब बाय योर राइट हैंड? इट कैन नॉट बी, बिकॉज राइट हैंड में लोगे तो आपका जो थंब का डायरेक्शन किधर रहा है? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में. पॉजिटिव डायरेक्शन. नेगेटिव है, बट आप इसको इस तरह से लो, नेगेटिव हैंड को लो और उसको घुमाओ, देखो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे आप. यस सर. ओके. ओके, आई शुड स्टॉप हियर. ओके सर. Thank you, sir. थैंक यू सर.